अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर का टॉपिक हमारा बेस करता है लाइफ स्किल्स के मुतालिक, जिसका मतलब है ज़िंदगी गुजारने की सलाहियतें। आजकल लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में और ऑर्गेनाइजेशन में। आइए इस लेक्चर में जानते हैं कि लाइफ स्किल्स हैं क्या और उनको कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। Life skills are the ability for adaptive and positive behavior that enable humans to deal effectively with the demand and challenges of life, such as communication, leadership, problem solving, time management, empathy management, conflict resolution, and public speaking. यहाँ पर बात हुई है कि लाइफ स्किल है क्या। बताया गया है कि लाइफ स्किल वो सलाहियतें हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं हमारी ज़िंदगी को गुजारने में। किसी भी लेवल पर हो सकता है, एट इनिशियल लेवल, एट मिडल एजेस, एट वर्क प्लेस, तमाम की तमाम जो हम जिंदगी गुजारते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो सलाहियतें इंसान बुरुए कार लेकर आता है उनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। इसमें लर्निंग, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी, ट्रेनिंग्स, ग्रोथ, एबिलिटी, एक्सपीरियंसेस बहुत कुछ शामिल है। पहले इस चीज़ पर एज सच फोकस नहीं किया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन स्किल्स को तालीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। तालीम का ताल्लुक एक जिस तरह से डिग्री लेना है या पढ़ना लिखना है, उसमें अगर इन स्किल्स को भी शामिल कर दिया जाएगा जिनका ताल्लुक आपकी तरबियत से बनता है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान को हेल्प करती हैं उसकी लाइफ को आसान करने में और बेहतर बनाने में। Life Skill by WHO and UNICEF. The World Health Organization (WHO) defined life skill as the ability for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demand and challenges of everyday life. Then UNICEF defines life skills as a behavior change or behavior development approach designed to address a balance of three areas, especially knowledge, एटीट्यूड एंड स्किल्स। इन दोनों डेफिनेशंस में बिहेवियर के चेंज पर जोर दिया गया है कि लाइफ स्किल्स को सीखने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के बिहेवियर को चेंज किया जाए और उसको एडेप्टिव बनाया जाए कि वो कुछ सीख सके बेहतर तौर पर। Further, life skills are essentially those abilities that help to promote mental well-being and competency in young people as they face in the realities of life. These skills be utilized in many content areas such as life issues, prevention of drug use, sexual violence, teenage pregnancy, HIV, AIDS prevention, and suicide preventions. In short, life skills empower young people to take positive action to protect themselves and promote healthy and positive social relationship. लाइफ स्किल्स हमें इन तमाम इश्यूज़ पर काम करने का मौका देती हैं। अगर इंसान ने किसी भी लेवल पर लाइफ स्किल्स को सीखा हो, उनके बारे में उसको इल्म हो, तो वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से इश्यूज़ को सॉल्व कर सकता है। ड्रग्स के मुतालिक उसको पता होता है, क्योंकि ये तमाम मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आजकल के हमारे ह्यूमंस को या यूथ को फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को हम शामिल निसाब रखेंगे, तालीम का हिस्सा या किसी भी सेक्टर में आप अगर काम कर रहे हैं उसमें इसकी तालीम दी जाएगी, तो डेफिनेटली इंसान जो है वो बहुत सी चीज़ों को बर वक्त समझ सकता है और उसको फिर हल भी कर सकता है। 10 core life skills. UNICEF, UNESCO, and WHO list 10 core life skills as problem solving, critical thinking, effective communication skills, decision making, creative thinking, interpersonal relationship skills, self awareness building skills, empathy, coping with stress and emotions. प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प करती है मसाइल को हल करने में। क्रिटिकल थिंकिंग का ताल्लुक आपके बहुत सी चीज़ों से है जिसमें आप किसी भी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उस पर प्रॉपरली वर्क करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद अडॉप्ट करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इन है आजकल, टीम वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अहम हैं ये भी, जैसे आपने फ्यूचर के डिसीजंस लेने अपनी लाइफ के या प्रोफेशन के। देन क्रिएटिव थिंकिंग में आप न्यू आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं और आपको पता होना चाहिए ये स्किल आपको प्रोवाइड करती है वो टेक्निक्स जिसमें आप बेहतर तरीके से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरपर्सनल और रिलेशनशिप स्किल्स का ताल्लुक लोगों से है कि आप किस तरह से लोगों से रिलेशनशिप करते हैं और उनको किस तरह से ग्रो कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से,
with a positive attitude. سیلف اویئرنیس بلڈنگ سکلز میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی خود کی نیگیٹیوٹی اور آپ کی خود کی پازیٹیوٹیز کیا ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی ویکنیسز کیا ہیں اور اسٹرینگس کیا ہیں. امپتی کا تعلق سوسائٹی سے ہے، لوگوں سے ہے، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی نیڈس کیا ہیں، پرابلمس کیا ہیں اور سچویشنز کیا ہیں، اور آپ نے ان کی سچویشنز کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے وہ سچویشن جو ہے وہ ہینڈل کرنی ہے. کوپنگ وتھ اسٹریس اینڈ ایموشنز آج کل بہت زیادہ ان ہے، ہر کوئی پریشانی کا شکار ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے. اس میں بتایا جاتا ہے آپ نے اینگر کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، ایموشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسٹریس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ تمام کی تمام سکلز انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر اہم کردار ادا کرتی ہیں. WHO further provided three main components of life skills. Number one, critical thinking skills and decision making skills. In this skill, a person evaluating the present and with that decide or take actions for the future. Number two, interpersonal and communication skills included verbal and non-verbal communications, negotiation, and refusal skills that directly affect one's ability to manage conflict. And this also included empathy, which is the ability to listen and understand others' situation and needs. And teamwork ability helps to expressing respect for those around us. اس میں کیا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہیلپ کرتی ہے ہمارے فیوچر کو ڈسیزن لینے میں، ہمارے پریزنٹ کو سمجھنے میں. انٹر پرسنل اینڈ کمیونیکیشن اسکلز کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان سے بات چیت کرنی ہے، کانفلکٹ کو ریزالو کرنا ہے، امپیتھی سے کام لینا ہے اور ٹیم ورک کس طرح سے کرنا ہے. These skills result in the acceptance of social norms that provided the foundations for a positive and social behavior. Number three, coping and self-management skills. In this refer the skills to increase the internal locus of life. جیسے ہماری سیلف اسٹیم ہے، اینگر ہے، اسٹریس ہے. اس اسکل میں بتایا جاتا ہے how to control anger, stress management, how to aware about yourself and evaluate about yourself, etc. ٹائم مینجمنٹ. یہ تمام کی تمام اسکلز ہیلپ کرتی ہیں انسان کو، انسان کی ذات کو امپروو کرنے کے لیے. تھری کلاسیفیکیشنز آف لائف اسکلز جن میں ہم نے ابھی پریویسلی ڈسکس کیا، ان کو فردر ہم تھری مین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جس میں سیلف اویئرنیس ہے. نمبر ون، knowing and living with oneself. This theme covers topics that foster the student's relationship and understanding of themselves, including their thoughts, feelings, and behaviors such as stress management, emotional regulation, positive thinking, and self-esteem. Then interpersonal skills ہیں. Here, knowing and living with others and how to establish healthy, respectful relationship, and how to communicate and resolve the dispute. اس میں empathy, listening skills, interpersonal effectiveness, handling dispute, managing relationship, confident communication. Thinking skills. Making effective decisions in this theme include concrete ways of thinking and executing tasks so that youth will make effective decisions, set relevant goals, and be informed consumers of information. Here, goal settings, decision making, problem solving, critical and creative thinking, executive function skills, and resilience شامل ہیں. تو یہ تھری جو مین ہم نے کلاسیفیکیشنز کی، اس میں تمام وہ شامل ہیں اسکلز جو کہ ہماری کور اسکلز بھی ہیں اور جو ہماری جرنل اسکلز بھی ہیں. تمام ایسی اسکلز جو کہ انسان کی لائف کو امپروو کرنے میں ہیلپ پرووائڈ کر. Life skills help youth to make better choices concerning their health. Life skills help to learn knowledge, attitude, and values for healthy behavior. Thus, adolescents of today grow up surrounded by mixed messages about sex, drug use, alcohol, adolescent issues. Parents and teachers warn of the dangers about all these, but from other peer pressures, contradictions raised. It is through life skills that teenagers can fight these challenges and protect themselves from teenage anxiety, HIV/AIDS, drug violence, sexual abuse, and many other health related problems. سچویشنز بہت سی انسان پریکٹیکل لائف میں فیس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم انسٹیٹیوٹس میں یا کسی بھی پلیٹ فارم میں جہاں بھی ہم لوگ
اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اگر لائف اسکلس کے متعلق ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے گی، جو 10 ڈومینز ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو ڈیفینیٹلی جب وہ پریکٹیکل لائف میں اپنی جائے گا تو ان تمام سچویشنز کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے گا. آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. Watching. I hope you like the video. Do share with others for more informative videos. Keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.